हेलो एवरीवन। टुडे विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम लोग ने लास्ट क्लास टाइम सीरीज जब स्टार्ट किया था वी टॉक्ड अबाउट वन कंसेप्ट दैट वाज मूविंग एवरेज मेथड एंड अ बिट ऑफ द इनिशियल थ्योरी। आज हम करेंगे जो सेकंड मेथड है हम लोगों का, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब ये एक्चुअली क्या करता है ना, अगेन द क्वेश्चन विल बी सेम। आपके पास एक टाइम सीरीज डाटा, एक टाइम बेस्ड डाटा होगा, दैट मीन्स यू विल हैव से अ लॉट ऑफ इयर्स एंड अ corresponding डाटा। सो से 2010 में इतना, 2011 में इतना, 12 में इतना, 13 में इतना, 14 में इतना वैल्यू था। सो इफ आई प्लॉट द, दिस इज योर टाइम, ईयर मंथ जो भी है, और ये हो गया आपका जो भी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, सेल्स, प्रोडक्शन, जिसका भी बात हो रहा है, एंड वी प्लॉट द, ठीक है। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट लाइन्स वी कैन फाइंड आउट, राइट। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, देर आर सो मेनी लाइन्स। Out of this, one of the line will be known as the line of best fit. और वो line of best fit जो है वो हमें ये method of least square ढूंढ के दे। So line of best fit is obtained by the method of least square. How do we determine that? So supposingly ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं है। Say this is the line of best fit, for example. Okay, these were the actual values, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और ये अगर मैं लाइन ले रही हूँ तो इस टाइम पे, okay, इस करस्पॉन्डिंग टाइम पे आपका लाइन बोलेगा नहीं ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये जो डिफरेंस है, दीज डिफरेंसेस आर नोन एज डेविएशन। डिफरेंस का फैंसी नेम होता है डेविएशन, ठीक है। डेविएशन जैसे ये जो वैल्यूज है वो तो ओरिजिनल वाई वैल्यूज हो गए, और ये वैल्यूज हो गए जो हमारी लाइन देगी वाई टी। सो डेविएशन इज वाई माइनस वाई टी। कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। पॉइंट अगर लाइन के ऊपर ही है तो जीरो भी हो सकता है। सो दीज डेविएशंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। So how do we determine कौन सा line of best fit होगा? It has to satisfy two conditions. First, when I add all these deviations with their sign, I should get zero. When I add all the deviations, sometimes the deviations are positive, sometimes are negative. When I add them, I should get zero. And second, when I square them, as soon as I square them, the negative side is removed, right? सिर्फ positive values ही बचे हैं. So square of the deviation should give you a minimum value. That particular line will be known as the line of best fit. So method of least squares. Method of least squares helps to find the line of best fit, also known as trend line, that satisfies two conditions. That satisfies two conditions. First, sum of deviations should be zero. Sum of deviations of y. Y are the values that the question provides. From their corresponding trend value is zero. Summation y minus yt equals zero. Summation y minus yt zero. Second, sum of squares of deviation
should be minimum. That is summation y minus yt square should be least when calculated from all the different lines. ये दोनों कंडीशन जो बेस्ट सेटिस्फाई करता होगा उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट. Okay, so formula, the equation of trend line or line of best fit is yt equal a plus bx. Okay, अब वेरिएबल तो होने ही पड़ेंगे बिकॉज इट्स एन इक्वेशन. सो ए और बी आर द नंबर्स, द कोएफिशिएंट्स, द कांस्टेंट्स जो हमें क्वेश्चन से ढूंढना है. वे ए एंड बी आर ऑब्टेन्ड by the two normal equations. फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगा, सब में समेशन लगा दो. ये जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन है ना, सब में समेशन लगा दो. समेशन वाई, ए को अगर 10 बार ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, ए को 20 टाइम्स ऐड करोगे तो 20 ही आएगा, ए को n टाइम्स ऐड करोगे तो ए एन आएगा प्लस बी समेशन एक्स. सेकेंड इक्वेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन में पहले एक्स इंटू करो, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद समेशन लगाओ. These are the two trend lines. Okay, these are the two normal equations. But जब हम sums करेंगे, we only use this. We only use this if summation x is not zero. और अगर summation x zero है, ये दोनों इक्वेशन में समेशन x की जगह जीरो डाल दो. अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालते हो समेशन x की जगह जीरो, क्या बचेगा, समेशन y इक्वल ए एन. सेकेंड टर्म तो जीरो ही हो गया. सो ए का फॉर्मूला बन गया समेशन y बाई एन. सेकेंड वाले फॉर्मूला में, सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर आप समेशन x के जगह जीरो डालोगे, फर्स्ट टर्म जीरो बन गया, तो b इज समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स. अगर सम ऑफ एक्स इज जीरो तब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मल इक्वेशंस यूज करेंगे. अभी सम करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. यहाँ तक लिख लिया. हाँ just a minute. Done, ma'am. क्वेश्चन करते हैं, you'll understand. Question: fit a straight line trend by the method of least squares. That will be your question. क्वेश्चन में आपको दो ही चीज दिया हुआ रहता है, टाइम और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज. ईयर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. एकदम जरूरी नहीं, इट्स नॉट अ नेसेसिटी दैट द टाइम हैज टू बी कंसेक्यूटिव. एक के 4, 5, 6, 7 ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ठीक है. द वैल्यूज आर 114, 130, 126, 144, 138, 156, 164. This is your question. And it says with a straight line trend by the method of least squares. ये दो कॉलम हमें दिया हुआ रहेगा. The first column, the time column, is denoted by T. The second column which they give us is denoted by Y.
बट इफ यू लुक एट योर फॉर्मूला, फॉर्मूला में x है ना? सो x क्या होता है वो हमें बनाना पड़ता है. सो हियर द नंबर ऑफ इयर्स n, here the number of time, how many years are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years. Odd. So there will be a middle year. Which year is middle year? Which year is a middle year? 2007. जो बीच में बैठा है. वैल्यू वाइज डिटरमाइन नहीं होता. जो भी बीच में बैठा है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, साथ पोजीशन है, जो भी फोर्थ पोजीशन में बैठा है वो मिडिल ईयर, वो मेरा मिडिल ईयर है. So how we calculate x is from all the time subtract 2007. From all the times subtract 2007. So 2004 minus 2007 minus 3, 5 minus 2007 minus 2 minus 1 0, 8 minus 7 1, 9 minus 7 2, 10 minus 7 3. Now add them. How much is summation x? 0. 0. So we'll be using this formula. ये वाला. A summation y by n, B summation x y by summation x y. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now No, we will ma'am. need two more columns, x square and xy. X square and x into y. X square 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Add them. 28. X into y. Multiply these two now. Add. 214. Everybody done till here? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. now the formula was A was summation y by n. Okay, we did not find summation y. What is the total of y? 972. This will be 972 by n is 7. Calculate. Find till 3, write till 2. 138.857. So 138.86. Yes. B is summation xy by summation x square. So 214 by 28 gets cancelled by 2. 107 by 14. How much?
How much? Ma'am, 7.64. Perfect. So the trend line equation of trend line is yt equal a plus bx. So yt, a is 138.86, b is 7.64x. Now this b is also known as the slope of the line. Huh? B is also known as the slope of the trend line. It is also known as the slope of the trend line. Any doubt? So if the question says find the straight line trend, find the equation of the trend line, fit a straight line, find the line of best fit, this is what we need to calculate. Done? Yes, ma'am. Yes, In ma'am. addition to this, they can also ask us uh, trend value for the year 2005. So 2005 is the time. So we want to calculate y 2005. But in this formula, we don't put t, we put x. Now, for the year 2005, what is x? -2. Minus 2. So in the equation, put x equal to minus 2. Calculate. Twen- 123.5. Yes. Yes, ma'am. But they can also ask us trend value for a year which is not here in the question. Trend value for the year 2012. So time is 2012. हम लोग इस sum में how are we calculating x? X was time minus 2007. So यहाँ पे भी same, even though the value is there in your table or not, हम लोग x का value same format से calculate करेंगे जो corresponding table में हुआ है. So it will give us 5. 5. So अब question में 5 डाल दो. Y 2012. 138.86 plus 7.64 into 5. Ma'am, Answer. 177.06. Perfect. अब प्रॉब्लम कब हो जाता है जब क्वेश्चन खाली ये बोले फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन निकालना है एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज. इट डजंट टेल यू फॉर विच ईयर, इट ओनली सेज फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज. तब हमें सबके लिए ढूंढना होगा. फॉर ईच वन ऑफ दीज एक्स वी फाइंड द ट्रेंड वैल्यू. और हम लोग टेबल में एक और कॉलम बनाते हैं ट्रेंड वैल्यूज का. और सारा टेबल में जितना भी वैल्यू है उन सभी के लिए हमें आंसर निकालना होगा. जैसे अगर 0 है तो ऑब्वियसली 138.86 से आएगा. फिर -1 का आंसर, +1 का आंसर, -2 का आंसर, +2 का आंसर, सारा निकालना पड़ेगा. इफ दे डोंट मेंशन द ईयर, if they only says find the trend value, tabulate the trend value, we have to calculate for the entirety. और एक और कॉलम बना के लिखना पड़ता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, here the number of years were even. The number of years can also be odd. Question is fit a straight line and also tabulate the trend values. I did not tell you the year, huh? So year
1995, 96 till 2002 consecutive. Sales in crores 6.7, 5.3, 4.3, 6.1, 5.6, 7.9, 5.8, 6.1. You will need a column for x, x square, x, y, and trend values because the question says that. Now, the first question is how to find x. Now, here the number of years is how many years are here? 8. 8. It is even. So, is there a middle year, one single middle year? No, ma'am. No. So, there are two middle years, right? What are the two middle years in our case? 98 and 99. Yes, What is ma'am. the mid value of this? Find the average of 1998 and 1999. 98.5. So from all the time, subtract 1998.5. From all the time, subtract 1998.5. So this is minus zero point 0.5. It's consecutive, so we can directly write minus 1.5, minus 2.5, minus 3.5. Below it will be positive plus zero point 0.5, plus 1.5, plus 2.5, plus 3.5. Calculate sum of x. Sum of x. 0. 0. So still the same formula is valid? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, start. So x square 12.25, 6.25, 2.25, 2.25, 0.25, 0.25. Total of x square is 42. then xy minus 23.45 minus 13.25 minus 6.45 minus 3.05 plus 2.8 11.85 14.5 21.35 summation xy. How much? Ma'am, 95, 5.45. Sorry? 95.45. No. How can it be so huge? Impossible. Some are negative also. Sorry, ma'am. Ma'am, 4.3. Yes. Summation y. Summation y. 47.8. Very good.
Since sum of x is 0, A is summation y by n. 47.8 divided by 8. Answer. Answer. 5.9. 975. Three digits only. Yes, ma'am. And B is summation xy by summation x square. 4.3 divided by 42. This is 0.102. So equation of trend line will be yt a plus bx. 5.975 plus 0.102x. Yes. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. it also said find the trend value. It did not tell you the year. That means we need to find for the entire table. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Let's start. First, any which one. Say we'll start from here, zero point 0.5. Zero point 0.5 is basically half only. Y 1999. 5.975 plus 0.102. 6.026. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this value is 6.026. Now, since they are all consecutive, only because they are all consecutive, you can use a trick. What is your B value? 0.102. For the values above this, keep on subtracting minus 0.102. And for the values below this, keep on adding plus 0.102. So if I add 0.102, 0.102, 6.128, that will be my next value. Again, add 0.102, 6.23. Again, add 0.102. Only if it is consecutive. For values before this, subtract minus 0.102, 5.924, minus 0.102, 5.822, minus 0.102, 5.72, 5.72, minus 0.102, 5.618. Understood? Yes, ma'am. Everybody clear? Did you all understand? We'll do this only if the question says find the trend values. It doesn't mention the year. Then we shall find all of them. So Yes, whether ma'am. the year is consecutive Yes, or ma'am. not, it doesn't matter. Suppose if here instead of 1995, they would have given 1990. Yes. And here instead of 2002, they would have given 2007. Again, if you would have taken the difference, for example, here, 1990 minus 1998.5, this is minus 8.5. 2007 minus 1998.5, this is plus 8.5. You would have still got sum of x 0. You would still continue with the same formula. It doesn't matter. And even the middle year will be the same.
बिकॉज when you're finding the middle year, number of terms matter. कौन है वो मैटर नहीं करता. 8 लोग हैं, बीच का 2 का मिडल वैल्यू. दैट इज व्हाट इट मैटर्स. So as long as sum of x is 0, we always use the same formula. If sum of x is not 0, then we will bring those normal equations. Understood? Yes, ma'am. Question. Yes, ma'am. Question. Year 2010, 2012, 2013, 14, 15, 16, and 19. The years are not consecutive. Sum of x may be 0, may not be 0. If it is 0, तो same formula a summation y by n, b summation xy by summation x square. अगर sum of x 0 नहीं आया, then we will go to normal equations. Sales in lakh. 65, 68, 70, 72, 75, 67, 73. We will need x, x square, xy. So how do we find x here? How will we find here x? From all the Uh, time we will subtract. 2014. Yes, 2014 is the middle value because n here is 7 odd. Find out. 2014 minus 4 minus 2 minus 1 0 1 2. Right. What is sum of x? 1. 1. It is not 0. So we'll find out everything, but we will use later on for a and b the normal equations. So ये हम लोगों का y है. Find the sum of y. Find sum of y. Find sum of y. 490. 490. ठीक है. x square. X square Fifty-one. okay. 16 4 1 0 1 4 25. 51. XY minus 260 minus 136 minus 70 0 75 134 365 summation x. Ma'am, 108. So
normal equations. First was summation y a n plus b summation x. Summation y is 490 7a plus b. Second, summation xy a summation x plus b summation x square. 10a plus 51b. Now, using linear equation in two variable concept, find a and b from here. Suppose first वाला as it is रखा, सेकंड में into 7 कर रहे हैं, subtract, ये तो कैंसिल हो गया. So b will be 266 divided by 356. How much? Ma'am, 0.74. 747, so 75. Now calculating. Multiplying the first one by 51. ये कैंसिल हो गया. How much? 69.75. No. Decimal is wrong. 69.89. Yes. So 69.9. Therefore, the trend line will be YT equal A plus BX. Yes. Everybody got the answer? Yes, ma'am. Yes, mom. So Ma'am, I had a please doubt. बोलिए.
Ma'am, we can also calculate A from the equation 108 is equal to A plus 51B, right? कैन, बट बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो फिर ए का और डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो Oh, जब okay. भी अगर एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है या प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मतलब प्रॉपर इंटीजर नहीं है, तो आई एडवाइस की वापस एलिमिनेशन ही कर लो। वरना जैसे शायद वो करने से 69.7 आ रहा है, Yes, तो वो ma'am. थोड़ा डिफरेंस आता है। या Okay, तो ये ma'am. फ्रैक्शन यूज करो, यूज दिस फ्रैक्शन, उस इक्वेशन में ये फ्रैक्शन डाल के करो, Okay, ma'am. rather than the decimal, then it will match। ठीक है। Yes, ma'am. फॉर दिस चैप्टर ये सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है हम लोगों का, गो थ्रू देम, दैट्स द एंड ऑफ आवर टाइम सीरीज चैप्टर।